there is a lot of ease that you will face, right? Your preparation will become smooth. कहीं पे आपको अगर ऐसा लगता है that मेरा जो commitment है वो waver कर रहा है, right? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उस टाइम पे आप अपने आप को वो बात याद दिलाओगे कि नहीं, मैं इसलिए बनना चाह रहा था, राइट? लोगों ने ये मेरे से बात बहुत बार पूछी कि सर इतने लंबे समय तक आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? एंड समय चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 1 साल का हो, एंड इट मे बी मोर देन दैट, राइट? You should have that same vigor, same energy, same enthusiasm that will keeps you going. So what keeps you going? You must know that, right? What motivates you? Never think that you know everything. The moment you start thinking like मुझे ये topic आता है पूरी तरह से, and there is no need to further study it even. See, these people who prepare this paper, no, they are not fools, or they are not inexperienced. They have, gone through your life stage, and they have more experience than your age, right? They understand what you think, right? They are ahead of you in time, in energy, in experience. Yes, in energy you may exceed those people undoubtedly, but the experience is unbeatable sometimes, and our fight will be with that. We have energy, they have experience, right? We have motivation, they have wisdom, right? So we have to balance these things. Our energy, our motivation should be able to win that wisdom, that experience. Then we will be the officer that they want. Okay, basically in your process you must understand what this exam is. What this exam is, civil services examinations, right? Whether for UPSC or state civil services, you must understand what they want, right? They don't want an academician, that is for sure. Otherwise PhD करने वाले बच्चे उनको ज़्यादा knowledge होती है, right? But PhD students hardly can qualify prelims or mains. Sometimes, yes, many PhD aspirants also qualified civil services. I am not denying that. They don't want scientists, they want administrators. What is the difference between academician and administrator? You must understand first. See, academician, a scientist, they are theoreticians. The civil servants, bureaucrats are practical people, right? They are bookish. You live in the field. That is the difference between the two, right? If you do the same way, theoretical things, theoretical बातें, तो आप practical problems को solve कैसे करोगे, right? Problems are faced by the people. We may have a theory, but a bureaucrat must know the application of the theory for the well-being of the people. Now, I give you one example. I was traveling in this morning, so there was rain, right? Because I have studied this rainfall, right? What rainfall is, first thing. Sometimes we have small, droplets. Sometimes we have bigger droplets. Sometimes we have hail. In some areas we have snow, right? So immediately it came into my mind. When we travel through, sometimes we have that, there is flooding in some areas, right? There are some potholes on the road created just by the rainfall. Does these things strike in my mind when I was driving or not? That is a big question, because I was trying to apply that knowledge in looking at the problems that I have faced, right? And if I can judge the problems, if I can see the problems, I can find the solution for that also. If I am traveling, did I observe the practical problem of traffic? Why the traffic is? Is that in the road design, population, or there is something else? People's behavior. सभी को आगे जाना है,
right? रोड इतना ही है, सभी को आगे जाना है. That is also a big problem. So is it people's behavior? Is it the infrastructure or the population? Right? All three are the reasons. But did you observe that? Did you try to apply your knowledge when you have studied infrastructure? Did you apply your knowledge or not? That is a big question. Right? Suppose all of us nowadays use that sanitizer. Right? Sanitizer is, what it contains. Did you ever bother what it is? Why it kills the germs on our hands? See, UPSC asks these questions. State civil services, even Haryana, Rajasthan, they do ask these questions, that what is the principle on which these sanitizer contain ethyl alcohol, right? How does it kill? Does it break the cell wall of the bacteria or the microbes, right? Or it create any difference, osmotic difference that kills? Why does it kills corona? Right? So unless you have this knowledge, you may not be able to apply it. So theory is required, but you should know the application also. Theoreticians only live in the theory. You live in the practical world where you need to know the theory, but the application is most essential for you. Right? There have been a question on the composition of Dettol. Right? You all take medicines. You all use computers and all these things, this stuff, right? What is 5G? What is 4G? Right? So from now on, make yourself, एक तरह से motivated that whatever you observe, you will try to go to the root of it. Whatever you see. Mobile देख रहे हो, this remote control, right? Why, what is the principle? What is the technology behind it? You go on the toll, you pay toll tax, automatically that FASTag deducts money. What is the technology behind it? Right? You go somewhere, you saw that woman is beaten up by their, in-laws family. She may be bleeding, she may have, right? What is that issue? What did you observe? Social justice, right? Human rights are violated. Which law? They are liable to be punished. You should be able to think about all these things. So basically what I am saying, be a very good observer. Your perception power, your observation should be so strong that whatever you see, you can make out various dimensions of it. Right? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में. देखो जो किताबों में मैं पढ़ाऊँगा that is important, but what I am telling you this thing, it is more important than that. Right? Our purpose will be to go to that. Right? So basically whenever you observe anything, whenever you see something, try to make sure that you go to the depth of it. If you do not go to the depth of it, you won't be able to understand it and you won't be able to think about it, right? So your observation power should be so strong. Now, basically you are an observer, right? But what you should observe? That is a second question that comes in your mind, right? Basically what I told you, that know this examination. What this examination is examination is a practical examination, not a theoretical examination. You should know the theory to understand the practical problems, whether it is in the society, whether it is in the governance or polity, whether it is in the geography, right, environment, or it is in the science and technology field, right, or the disaster. Nowadays there was flooding. What are the causes of the flooding? Is it the development, haphazard development that we say, or it is something rooted in the geology, geography, topography of that region, right? Or again the people's behavior, more and more encroachment, है ना? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ, ये एक behavior है ना? मेरे एक इस स्लोप को ठीक कर देने से क्या हो जाएगा? 10 पेड़ मेरे ने काट दिए तो क्या हो जाएगा? है ना? मेरे जानवर वो क्या कहते हैं
फॉरेस्ट में खाना खाने तो जाएंगी, चरने तो जाएंगी, राइट? सो हाउ कैन आई स्टॉप इट? सो ग्रेजिंग अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे या फिर रेगुलेट नहीं करेंगे तो नेचुरली देयर वोंट बी फॉरेस्ट एंड द स्लोप्स will not be able to hold the flowing water, right? So first thing that I told you is understand this exam, be a very good observer. The second thing, what you should observe and how you should think on your observations, how you multiply things on your observation, right? कि तुमने देखा तो सही, जैसे आपने एक कोई इंसिडेंट देखा जिसमें किसी औरत का पिटाई हो रही है उसके इन लॉज के हाउस में, ठीक है? क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो कहां से लाओगे आप, ठीक है? तो बेसिकली फॉर दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस, राइट? सिलेबस, इफ यू सी ब्रॉडली, whether it is the UPSC or HPSC, RPSC or any other state examination, basically more or less UPSC is the base from where the adaptations were made, right? So I am telling you about UPSC. What UPSC syllabus carry? UPSC syllabus carry prelims and mains, right? Prelims is the generalistic examination in which all the possible general studies related stuff is mentioned, right? So उसको हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस के सिलेबस में 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। GS1 में आपका है ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। GS2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। GS3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। Paper 4 is about ethics. Now, if you are a very good person, right, very good observer, first thing what you will do, you will take the syllabus and start thinking about it, right? At least read what is written in it. If you go through it, you will observe that in this syllabus there are many dimensions. So how you should think about a problem? First thing is geographical. Is there something in geography? हरियाणा में पैट्रियार्की है, is it something to do with that geographical location of that area? Does it have to do something with the history of that area? Or there is societal problem, or there is anything related to the governance, law, which are not properly enforced? Is it a social right violation, human right violation? Under what law it is prohibited, punishable, right? Then you have to think about, is it rooted in the economic structure, agriculture based society, right? Then think the ethical dimension in the paper 4. So how you can think? This syllabus is not syllabus, it gives you immense opportunities to widen your horizons, your thought process, right? Whenever some people say that, sir, मैं बहुत सारी dimensions लिखनी होती हैं, सारी dimensions कहाँ से लाऊं? पेपर के syllabus में सारी dimensions mentioned है। The only thing is, whenever you study, whenever you observe any problem, try to think in that way. Your answer writing will become very easy and you can incorporate as many things as you can, right? So make sure that even if you are preparing for UPSC or state civil services, basically you should know the syllabus of UPSC, right? It becomes easy for you to think about things, right? To know what to write, how to write, right? How to write we will discuss slowly and steadily, that what you should write. Now, if you understand the syllabus, if you understand the demand of this paper, then the third thing that I demand is that know yourself, right? Know yourself fully, thoroughly. There are people who can study 16 hours. There are people who can hardly study 6 hours. There are people who are good readers. There are people who are slow readers. There are people whose comprehension is better. There are people whose comprehension is not that good. There are people whose writing is good. There are people who's not. There are people who are very expressive. They use diagrams, flow charts, etc. Right? There are people who are not very expressive.
And I'm not at all suggesting that if someone do not have good qualities, they cannot be developed. They can be developed, the first thing. The second thing is that even with those poor qualities, that poor handwriting, that poor expression and other things, people got selected because they worked hard, right? So, sorry. So from today onwards, it is your duty, wherever you feel that I am not good at it. See, first thing is that remove that handicap, that you are not good at something. First thing from my side is that remove that handicap that you are not good at all. You people are good at everything. You may not have focused on it. I give my own example. I was not good in maths, right? But when UPSC made it mandatory to qualify CSET in 2011 onwards, up to 14 or something, the marks were also counted. So basically I was not good at maths, but still I did very, decent in CSET. Basically I wanted it. There was something which was driving me. I told you the drive thing, right? If you have the drive, that motivation, nothing can stop you. Because of the CSET, I never failed, right? Although I was not good in maths, because I know my strength is English. I focused more on English, and whatever from maths I can do, I did. Right, so what I told you, there may be some subjects in which your liking will be more, there may be some subjects where your liking may not be that good. But make sure that you are at one level with your peer group on all subjects, and then basically you build upon the subjects where your strength lies, right, and remain at a level where you are not very strong. That is what everyone do now. We play on our strengths, right? Basically, although I will make sure that all the subjects are strong for you, but still it is up to you that where you will need to do more. And if you are strong in some area, suppose someone is strong in polity, someone is strong in economy, in geography. So basically make sure that you do not lose a single mark on those subjects, right? In prelims and in mains also you do well, because your strength, you should not fail there, right? There are other areas where you are weak. On that, at least you should get a decent marks, that is it, right? If you are at a level on others, and if you get good in your strength areas, that will be done, because it is the average examination. You need not to score 80% in this examination, right? Basically you have to come above the average. Okay, so identify your strength areas, identify your weaknesses if there are any, and work on them so that you can get the decent marks, and work on the strong areas so that you can take the edge, right? So this is what you have to do. Then when you understand the practicality of this, when you understand the syllabus and the various dimensions on which you have to think, and when you have understood yourself, your strengths and weaknesses, then understand the competition, right? Understand where, at what level you have reached in this competition, right? Because it is not just passing the college examination, it is the competition where everyone, even if you are not studying one day the newspaper and anything, others are there who are reading it. And if others are reading it, naturally you have lost one day, right? So understand the nature of competition. There is huge competition, and you require a commitment, a consistency and confidence, because you have a goal to clear, right? Your goal is to secure a rank in civil services examination. For that, you should know your goal first, you should be fully committed to your goal second,
right? And if you are committed to your goal, you will be consistently working hard. And if you are consistent and committed, you will be confident, right? And these 3 C's are the most essential elements for the success of any individual, for anyone. You just take any example. You take Gandhi ji, why he was a famous leader. You take example of Modi ji. You take example of any other leader or a bureaucrat, or say Dr. APJ Abdul Kalam, right? He was committed to what he was doing. Dr. APJ Abdul Kalam, he was consistent. He was consistently working, whether he fails or he succeed. Despite of anything, he keeps on going. He consistently made efforts for the good and good and good and better and better and better, right? And finally, you see the level of confidence they have, right? Whatever they are wearing, whatever color or creed they belong to, right? Whether they are strongly built or poorly built, but they have confidence. You take examples from anywhere, the leaders, the bureaucrats, politicians, right? Revolutionaries. They have these 3 C's which are common to them. Okay, so basically make sure that you are fully committed to your drive, right? You are consistent. Don't lose a single day. And now I come to the practical thing, because this is a practical exam, I told you earlier. See, consistency does not mean that you study, continuously 16 hours a day and you don't take a break. I'm not suggesting that at all, because we are humans. We live in a society, right? We have our other commitments, our obligations towards our parents, our friends, and towards our body itself, right? Our body also requires rejuvenation it requires breaks. You have to attend some ceremonies, some functions of your family, right? So what you should do, basically देखो, ऐसा भी कुछ होता है, there are days when you don't get time to study. अगर शादी में गए हो, 3-4 दिन तो वैसे ही निकल जाता है, maybe weeks. क्या करें उस दौरान? Make sure that at least half an hour you can. वो जो होता है ना, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं रन चुरा लिया, वो आधा घंटा चुरा लेना बस, right? That half an hour is required, because your brain will be programmed like this. It is not like पहले होता था कि that कोई emotional चीजें नहीं होती हैं. That means there are nothing like mental issues or things, or basically your cognitive processes, your behavioral processes, they are programmed. We are a programmed animal, right? Anthropology mein there are thinkers who suggest in that way. What they say, that our brain is programmed. Levi Strauss, a French anthropologist, वो कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से प्रोग्राम है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम है, और उसी के हिसाब से हमारी सोसाइटी भी प्रोग्राम्ड है. जो सोसाइटी हम देखते हैं वो भी प्रोग्राम्ड है, एंड यू कैन सी इट, यू कैन फील इट. ही वाज द मोस्ट फेमस you can say anthropologist of the 20th century, late 20th century. ठीक है, तो उनकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं काफ़ी हद तक. तो बेसिकली आपका ब्रेन भी प्रोग्राम्ड है. अगर आप 10 मिनट भी दे देते हो, अगर आप 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी सोल्व कर लेते हो उस दिन, या न्यूज़पेपर को जस्ट ऊपर से जस्ट स्किप ओवर भी कर लेते हो, तो एटलीस्ट तुम अपने ब्रेन को रीअश्योर कर रहे हो. पहली चीज़ तो कि मैंने आज सब कुछ, मैं वाइप आउट नहीं गया. वो कहते हैं ना कि जो कुछ क्रिकेट में बोलते हैं वाइप आउट कर दिया, राइट? है ना, कि पूरा वाइप आउट हो गया. नहीं, वाइप आउट नहीं हुआ, एटलीस्ट यू गॉट समथिंग. तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ अश्योरेंस मिलेगा उसको, है ना. आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा. अगर आपने 5 दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और 5 दिन आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, मेन खबरों को फैमिलियराइज किया अपने आप को, तो कौन सी अच्छी चीज़ है ये बताओ? बेटर चीज़ ये है ना कि आपने कुछ तो देखा, क्योंकि कुछ ना देख के तो आपने सब कुछ ही खो दिया ना. यू लूज कनेक्टिविटी, राइट? एंड योर ब्रेन ऑटोमेटिकली विल डिप्रेस. वहीं पे आपको लगेगा. बट अगेन, अगर कुछ ऐसा होता है कि मान लिया आपके पास न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने का टाइम है, तो क्या किया जाए?
न्यूज़, ये AIR न्यूज़ आता है, या फिर यूट्यूब पे आजकल सारे न्यूज़ अवेलेबल है, 10 मिनट का न्यूज़ सुन लो, ठीक है। आपके पास आजकल बुक्स जो हैं, लेक्चर्स हैं, उस पर कीप इट साइलेंट फ्रॉम नाउ ऑन एवरीवन, ओके। सो बेसिकली जब भी आपको ऐसा लगे तो आप न्यूज़ सुन लो, या कुछ ना कुछ बेसिकली अपने जो एग्जाम से कनेक्टेड रखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है ये चीज़। कभी भी ऐसा हो कि मैं नहीं दे सकता टाइम, राइट, कहीं घूमने भी जाते हो तो भी आप 10 मिनट निकाल सकते हो, हाफ एन आवर इज नॉट अ बिग डील, राइट। इवन इन द एंजॉयमेंट, वॉशरूम टाइम इज योर ओन ना, यू कैन यूज दैट टाइम। लोग गाना सुनते हैं तो तुम्हारा गाना अब यूपीएससी है, राइट, ये एग्जाम है, उसको सुनो आप, राइट। एंड आई कैन से दिस सक्सेस is the product of right guidance, positive attitude and knowledge, right. If you are guided in a right manner, you have a positive attitude towards yourself and towards the examination, and you will pick the right knowledge, right. I kept this knowledge in the last because knowledge is necessary, but there are people who are over flooded with knowledge, information, they get confused in their own knowledge. So it is not useful in this exam, right. You have to be sure about things, and if you are not sure, that confusion will not even let you qualify the prelims. बोर कर रहा हूँ, हैं, ये सच है ना। इसके बेसिकली नाउ अब आप तैयारी करोगे, तैयारी में क्या करना है आपको। सबसे पहला चीज जो क्लासरूम में होगा, that is the focus on the conceptual clarity, right. सबसे पहली चीज किस पे होगी, हमारा फोकस होगा that you understand the concept. After that you will be asked to either study the papers, prelims, you will be asked to write. So the second thing is that you have to practice the questions based on that topic, right. वो questions आपको prelims के पेपर मिल जाएंगे, यूपीएससी वालों को यूपीएससी के लिए और हरियाणा वालों को हरियाणा के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप वो क्वेश्चंस अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। थर्ड थिंग इज रिवाइज कंटिन्यूअसली। आई थिंक some of you know that how I suggest the revision strategy. Suppose you have read 10 questions, 10 topics we have studied in a day. आज के दिन में हमने क्लास में 10 टॉपिक किए, राइट। या फिर आपने घर जाके पहले से आपने एंटिसिपेट कर लिया that I have to read these topics, राइट। आपने दिन में 10 या 15 टॉपिक आपने पढ़े। अब 10 या 15 टॉपिक अगर इवनिंग में आप बैठोगे आप याद भी नहीं रख पाओगे, इवन उनके नाम भी याद नहीं आएंगे आपको, राइट। I can tell you that even whatever I teach you, if you just sit outside the class, just after the class, you may be able to recollect everything. That means our information have been lost just while we were processing it, right. That means it requires revision. Why you remember my face or your face of your any other friend whom you met just 5 minutes, but you forget about the text that you are reading? Why it is so? Yes, क्योंकि जब आप मेरा चेहरा देख रहे हो तो आप बहुत बार देख चुके हो, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली आप बहुत बार मेरा चेहरा देख चुके हो, राइट। यू हैव सीन एवरी एस्पेक्ट, hairs, nose and everything, so you have a better understanding of it. In the same way, if you just look at the words, आप पढ़ते कैसे हो, पढ़ा और आप आगे बढ़ गए, you have just one glance over it. So how you can think that you can recollect it, right? So in the same way, you have to look at the text again and again. That memory, right? You should familiarize with the text. And if you are familiarized with the text, with the knowledge, you will see that when there is a question, you can even think unconsciously, there will be hunch power that will tell you this is the answer. That will come when you have repeated revisions
on various dimensions that we have discussed. Whenever you read anything, right? See, we will give you here processed concepts, right? Then on those concepts, try to build your knowledge using those dimensions that I've just told you. Try to think from various dimensions, क्या क्या हो सकता है, right? And when you press your mind, that I call active reading. The passive reading is just glancing over, right? पेन चला दिया और पढ़ते गए, वो पढ़ना नहीं होता है, वो सिर्फ आप उसमें से लाइन खींच रहे हो. एक्टिव रीडिंग क्या है? टेक्स्ट से बात करो, राइट? ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन, थिंक हिस्टोरिकली, थिंक ज्योग्राफिकली, think socially, legally, environmentally, right? Try to find out solutions for that. What solutions have been taken by the government of India or the state governments, right? So that is active reading. So active reading help you gain more knowledge, processed knowledge, right? And it will help you be expressive. आपका expression power बढ़ाएगा, and expression power is the most essential thing to clear this examination. Now, basically एक तो ये चीज हो गया कि आप एक्टिव रीडिंग करेंगे. एक्टिव रीडिंग कैसे करेंगे? इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो एक्टिव रीडिंग करने का एक तरीका था, राइट? जो मैंने बोला कि नो द सिलेबस, नो द डायमेंशंस ऑन विच यू नीड टू थिंक. It is not necessary that everywhere all the dimensions are fitting, right? It is not necessary, but most of the dimensions will be fitting. That I can say, right? जिसमें उतना उसमें लगाओ और आगे बढ़ जाओ. Talk the same way with your friends, right? उनके साथ डिस्कशन करो, उससे और थोड़ा सा, maybe you are lagging on some ideas, they may be lagging in some ideas, but you sit together, share knowledge. Now, you have studied say 10 topics, right? Topic 1, 2, से 10 टॉपिक्स आपने पढ़े. आपने सिर्फ उनका नाम लिख दिया, राइट? आपने पहला टॉपिक पढ़ा, आपने सिर्फ उसका नाम लिख दिया, ठीक है? दूसरा पढ़ा, उसको आपने नाम लिख दिया. In this way you have written the 10 names. When you finish the one topic, just sit with the topic once at least and try to process it. क्या था? कितना याद आ रहा है? I can assure you immediately you can recollect at least 60% of it. Go back, try to see immediately. Or maybe 1 minute to process the information that has been lost. और जो 40% आपने lose किया, दोबारा नहीं भूलोगे for that information, right? So basically क्या करना है आपको? उस information replenish कर लेना है जो कि lost हुई थी, ठीक है? ये आपको काम करना है regularly. अब क्या होगा? वो तो आपने immediately किया. जब आप 10 टॉपिक पूरे हो गए तब उनके साथ बैठो और कोशिश करो कि 10 के 10 आप एक बार दोबारा से रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? 10 में से आप देखोगे वहां पे भी कुछ ना कुछ लॉस हुआ. तो एक बार तो इंडिविजुअल लॉस हुआ था, एक बार कलेक्टिव लॉस हुआ. इस कलेक्टिव लॉस में मे बी यू कैन बी एबल टू रिकलेक्ट 8 बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड इट ट्वाइस. सो आपको 8 ही याद आया, ठीक है? तो आपका फिर भी 20% लॉस हुआ. वो 20% आपने फिर से रिप्लेनिश कर लिया इमीडिएटली. उसमें आपने 5 मिनट लगा लिए सपोज, ठीक है? इवनिंग में जब आप सोते हैं तो एक बार बैठ के सिर्फ उस पेपर को जिस पे आपने लिखा है डेली का, आपने जो आपकी इनकम है, राइट, एजुकेशनल इनकम, उसके साथ बैठे आप और आप कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हैं वो कोशिश करो. ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर करोगे तो आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी. योर मेमोरी पावर विल एनहेंस सिग्निफिकेंटली. और ये एग्जाम है भी मेमोरी पे बेस्ड. क्यों? मैं आपको बताता हूं. आपको एग्जाम में स्पेशली मेंस में बहुत सारे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं. 3,000 to 4,000 वर्ड्स यू हैव टू राइट. वो वर्ड्स में आपको सोचो 3 घंटा है,
अगर आप स्पीड भी कैलकुलेट करोगे, रिक्वायर अ वेरी हाई स्पीड, एंड एट दैट स्पीड इफ यू हैव टू थिंक एंड राइट, यू कैन नॉट डू द सेम. थिंक एंड राइट अगर हर क्वेश्चन में करोगे ना, तो इट विल टेक मोर टाइम. यू डोंट हैव टाइम. Time is the most scarce resource that you have in your examination, right? And if you don't have time, then you should have mugged it up first, right? Then you can say write it without effort, right? So ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे करना है. इस एक्सरसाइज के थ्रू it had helped me a lot, right? And not me, my students have immensely benefited by this strategy. I devised this strategy with my college, in my college, but later on I tried to implement the same in this exam also, and I significantly felt कि काफी फायदा हुआ. And you can do it. It will be painful in the initial days, right? But within some time you will be comfortable. So ये वाला को करना है. Now this is our first day, right? So हम ज़्यादा पढ़ाई की बातें आज नहीं करेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा क्लास 10 o'clock राइट, और मेरी क्लास में सभी कंबाइंडली बैठेंगे. मैं आपको दोनों तरीके की बातें दूंगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी और मेंस ओरिएंटेड भी. आई विल टेल यू हाउ टू थिंक ज्योग्राफिकली इवन इन सोसाइटी, इवन इन अदर एरियाज, राइट. आई मे बी कनेक्टिंग इवन थिंग्स ऑल्सो. जियोपॉलिटिक्स में भी मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात कर सकता हूँ, राइट. सो बेसिकली होल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. सो अभी आपको ये देखो कि देर आर टू थिंग्स दैट यू एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू थिंक. एंड ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो, so geography is not just a discipline, right? It is the base also. पहले तो अर्थ ही बनी थी ना, 4.6 मिलियन या बिलियन years old, 4600 million years old. Earth is 4600 million years old, right? So इंसान तो कितना पुराना है? We humans, modern human beings, कितने पुराने हैं? मे बी 60. हम जो होमोसेपियंस मे बी 60,000 years old, राइट? तो हम तो ज्यादा पुराने नहीं हैं. Some people suggest, there are debates on that modern homo sapiens 2 lakh years evidence in some areas, right? 60,000 started. तो हम ह्यूमंस की बात करें और हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं बिकॉज ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एंड हैव एवरीथिंग इन आवर होम ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. वी हैव द होम also, no? We people live in a is regulated. What are the regulations? There are certain norms, values. There are some status. कोई husband है, कोई wife है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पोता, ऐसे there are relations, right? Whom you can marry, whom you cannot marry, what you should call, right? Everything is society, right? So हम ज्योग्राफी को बाकी चीजों के समझने की कोशिश करेंगे, पहली चीज, right? So don't think that one subject when we study geography, so we don't go for history or we don't go for society or we don't go for economy, because everything is interrelated, interrooted, right? Everything is interrooted. Even our behavior,
human behavior. Aristotle, the father of biology, right? Incidentally, he is the father of anthropology also, father of zoology also, right? Very great Greek philosopher, thinker. So says that we lack courage, right? We are sound, but we lack courage. He talks about the Europeans that they have courage. Visible in the human history also. You can just see India was colonized by outsiders, right? And who were the first to colonize India? Right? Other rulers, they came and absorbed in this culture, but this was the Europeans. So somehow what he told, ways back, thousands of years ago, he was right. Indians lack courage. Indians are courageous, right? And you cannot just about these things. So what I was saying, that human behavior also. So you can think on various dimensions. So first of all, we will go for geography, and simultaneously we may start other subjects, right? So that you don't get bored with one subject. Okay. So what is geography? Anyone? Of Earth. So the word geography is derived from geos, this is a Greek word, and graphos, right? Geos means earth and graphos means description. We are not studying today, we are just talking about various things. So don't take it that way, because I want you to make things clear for you. So what is this? What we did, we try to understand the etymology, the meaning of words. Why I was telling you about the meaning of these words, or why the books or the teachers, they tell about the meaning of word. For any other thing, whenever you are going to study any word, try to understand the etymology, right? The meaning of that word, what that word means. That is your duty, your responsibility. From now on, try to understand the meaning of the words, right? Because most of the people face the problem in understanding the questions, whether it is for prelims or mains. Why? Because they don't understand the words. If you have chosen language by your own, whether Hindi or English, now it is your responsibility to understand. First thing is the understanding. For understanding the questions, you require the understanding of the words. Describe any topic, to link it with other things, the meaning of that word, right? So for both of these things, you need to understand that what a particular word means, right? Make sure that you understand the word. Etymology is the most essential exercise that you have to do. Whenever you come across a word, on separate paper where the marks are counted for English is
you can say marks are not counted in mains paper, but for state services it is required, right? The marks of English are also counted, and if you score less than 65, you are already out of the race in almost all the state examinations, right? Whether it is Madhya Pradesh, Rajasthan, everywhere the marks for the English is counted, or Hindi for that matter. So you cannot go for that, right? You need to know the word, you need to know how to use, you need to know some correct English also, right? So ये चीज रखना है, और ये सोचता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी दे रहा हूँ तो मैं स्टेट सर्विसेज देता हूँ, देते हैं, right? And for even if your choice is not that, you feel that your level is a little higher, then also you can try for it, for the practice at least, right? You lose your attempts in the UPSC, it's better to just try for them, right? If somebody feels so. So that is the etymological thing that I was saying, right? Now, second thing is that whenever there is something, right? Suppose in geography, we are going to study, the first thing that we are going to study is the origin of Earth. Right? So in origin of Earth, we are studying here origin of Earth. Suppose you talk about any scheme, government scheme. There also you need to know when it was started. So there also this origin aspect is there, right? Then after this origin, you have to understand various other features, right? So same way, whatever is the thing, whether it is the practice of sati or whale, कब start हुई थी historically? Gupta period में start हुई थी, है ना? There are evidences in Gupta period. So basically you have to think that way, right? कि कब शुरू हुई थी कोई भी चीज. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो एक डेट है ना, शुरुआत की डेट है. कोई भी लॉ का एनफोर्स होने के लिए डेट है. आज कोई नया लॉ बनता है, मान लिया, वो कब से लागू हो सकता है? अगर मान लिया, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकता है? कोई ऐसा लॉ बनाया जाए देश में, नया लॉ बनाया जाए, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब आज बनाया है, फोर्स में आ जाए, क्या वो पीछे की डेट से लागू हो सकता है? वो लागू हो सकता है, राइट? हाँ, क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता लागू, सिविल लॉ लागू हो सकता है. कौन सा आर्टिकल कहता है वो? तो ये चीज भी आपको जाननी जरूरी है. तो आगे ये वाली बात, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो पहले रेट्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? और आपका सिविल लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकता है, पहले से भी लागू हो सकता है. सपोज आज लॉ पास किया, तो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले हम ये भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही वो एनफोर्स माना जाएगा. यस, ठीक है. हाँ, सो आपको ये चीजें याद रखनी है. ये सोचना कैसे चली, वो कोशिश करनी है, ठीक है? ओरिजिन जा सकता है कि why it originated, how it originated, what are the justifications for its origin. आपने जान लिया कि जब तो ओरिजिन हुआ for any law, even any social able to originate or progressive idea to originate, there must be the societal conditions which might have favored that idea, that able or that progressive element or that law, right? Or origin of any other custom in the society. There must be some circumstantial circumstances, right? यहां पे भी कुछ तो हुआ होगा कि अर्थ ओरिजिनेट हो गया. क्या हुआ होगा उस टाइम पे? Explains the origin of Earth.
we say that Big Bang took place 13 billion approximately. The Big Bang theory says, है ना? वो बीच में क्या कर रहे थे वो सब आपस में इतना क्या? So basically, for these heavenly things, right? These astronomical celestial bodies don't have explanations, right? We are still finding it. Even in the same way, for any societal thing, any other thing, we are in search of explanations. We don't have, valid explanations for everything. अब कोई पूछे आपका नाम ये रखा गया है, क्यों रखा गया है ना? कुछ तो सर्कमस्टेंसेस रही होंगी ना, पेरेंट्स लाइकिंग, है ना, या फिर कुछ उनकी सोच रही होगी, पहले उन्होंने कुछ सोचा होगा, कोई मूवी में देख लिया होगा, है ना? एक वो पंचायत, एक आई थिंक देयर वाज a TV series OTT platforms है पंचायत नाम से. It's a good thing that you must watch, है ना? तो उसमें भी नाम रखने पे लड़ाई होती है ना? The wife want different name and the husband wants, right? So basically there are conditions कि वो नाम भी कहाँ से originate हुआ. तो हर जगह पे कोई ना कोई तो चीज है ना, circumstances होती हैं. सती की जो प्रैक्टिस है, इट स्टार्टेड विद यू कैन से द गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुई. क्यों स्टार्ट हुई? देयर मस्ट बी द सर्कमस्टेंसेस. ह्यूमंस गुड, राइट? वाज इट इन द लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर व्हिच वाज गेटिंग होल्ड? वाज इट इन द पैट्रियार्की? पैट्रियार्की भी क्यों आई? पैट्रियार्की भी अगर हम देखें, जिन सोसाइटीज में मेल ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वहां पे मेल की पोजीशन फीमेल की पोजीशन से ज्यादा अच्छी होती है, राइट? दैट मीन्स डिपेंडेंसी. व्हाई हरियाणा हैव दिस practice of patriarchy, this custom, or you can say why Haryana's society is patriarchal. So it is rooted in the agricultural setup, right? Because women's contribution into that intensive agriculture was less. In the plough agriculture, it required more energy, more arm power, right? That was available to men than the women at that time. Nowadays we cannot say, because we have technology, girls can drive tractor easily, and nowadays even women are practicing more, but the norms, they have been customized, institutionalized, and it required time to change that, right? It required the legal machinery to work properly to change that, because the change is required at the mindset level now. Okay, and no matter, you can say that there are already changing that you are experiencing even in the society of Haryana, right? The girl athletes done much better than the male athletes, right? Even in the education, in the society, which is notorious for this patriarchal mindset, they done much. Is it basically that changes are coming in that, right? But you have to understand origin, the circumstances around it, justification for that origin, right? Then try to see its characteristics, whether it is good or bad. Whether it is good or bad, try to identify its advantages and disadvantages. You say patriarchy or say caste system, both are, you can say, in our first judgment, we say these are evil. Do caste or patriarchy have something good in it? Is there something good? अगर अच्छा नहीं होता तो वो इतने सालों तक चलती ही नहीं. आप समझते हो? अगर कोई चीज समाज में prevalent है, then that means that there is something good in it, right? अगर वो completely
ऐसा होता, then society must have thrown it out. Automatically वो weed out हो जाता है, जो practice अच्छी नहीं होती. It is sustaining, there must be something in it. What is the function of caste then here? Specialization of work, you can say. Yes, solidarity लाता है एक community में, एक caste group में, वो उनको बांध के रखता है ना. किससे शादी करना है वो easy हो जाता है, ये easy हो रहा है ना कम से कम. Yes, there are restrictions. I'm not saying, I'm not justifying it that caste based or intercaste, but there are dysfunctions of caste also. There are disadvantages of this system. It is oppressive. It promotes untouchability. It promotes the division in the society among the humans, fellow humans. So it is not good there. Patriarchy in the same way. It is protective somewhere. It also regulates human behavior, but it goes against the women's freedom, right? It is oppressive again, right? So there is a problem. Even patriarchy is not just related to men. Whenever women reach at a position, she has also become patriarchal. You see in most of the households, the eldest female is also patriarchal in nature. You cannot say that she is not patriarchal, she is also, because power is patriarchy, you can say in one sense. There. She also tries to enforce in the same way. Right? So just think about these issues, these problems, basically with open mind. I say that you think openly initially. Wherever you go wild, we are there to tap you कि यहाँ नहीं जाना था, थोड़ा सा वापस आओ. Right? Initially you can start thinking. अब करना क्या है? जब भी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, करा जाएगा, उस टॉपिक को लेके एक पेज लेना है, उसके अंदर लिखना है, राइट? और उसके ऊपर सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. ठीक है? आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करनी है. राइट? कोशिश करो सोचने की. और ये जो पेपर होगा ये आप डेली सबमिट करेंगे ताकि लिखा जा सके हाउ वाइल्ड यू रन. राइट? उससे पता लगेगा, ये तुम्हारा होमवर्क रेगुलर होना चाहिए. ठीक है? इट इज फॉर एवरीवन, इवन फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स और द न्यू वंस. हाँ, जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तब आप उस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम कर दो, बट अदरवाइज यू शुड थिंक दिस प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस. जब आप न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ते हो ना, तो भी आप ये कर सकते हो. उस टॉपिक को पकड़ा, अच्छा कहाँ सोच पा रहे हो, पहले की इंफॉर्मेशन क्या थी. सी बेसिकली देयर इज अ थ्योरी, स्कीमा थ्योरी इन साइकोलॉजी, कि हम नॉलेज कैसे इकट्ठा करते हैं या कोई चीज़ सीखते कैसे हैं. देखो, मान लिया आप छोटे बच्चे थे, आपने पहले कोई 4 देखा, दैट मीन्स आपने डॉग देखा, राइट? आप सरप्राइज हुए बिकॉज दैट इज अ न्यू थिंग फॉर यू. आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या है मम्मा ये, उन्होंने क्या, बेटा दिस इज अ डॉग. ठीक है? अब आपके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, राइट? दैट मीन्स 4 पैर वाला जानवर जिसकी एक पूंछ होती है और एक मुंह होता है, दैट इज अ डॉग. दूसरे दिन आपने एक बकरी देखी. बकरी ऑल्सो हैव ऑल दीज फीचर्स. बकरी थोड़ी सी बड़ी थी, डॉग थोड़ा छोटा था, तो आपने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा डॉग जो होता है, जो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये भी डॉग ही है, दिस इज बड़ा डॉग, यू कैन से. देन यू से योर मदर, मम्मा बड़ा डॉग जा रहा है. देन शी विल से, नो बेटा दिस इज अ गोट. राइट? थर्ड डे यू माइट हैव सीन अ काउ एंड यू विल से, मम्मा बड़ा काउ, बड़ा गोट. Say, no beta, this is a cow. Then you might have seen a camel where the neck is a little long. You ma'am, a cow. So we are, getting knowledge. We make schemas in our mind, and those schemas are impressions in our
Same, whenever you see something, you make a schema of that thing, right? That schema exists in your mind, and whenever you find similar knowledge in the newspaper or in the booklets, you try to relate with it, right? You try to contrast with that knowledge, existing knowledge in your mind, right? So that relationship, that contrasting of within your mind works at a very high rate. आपके दिमाग में काम करता है ना, जब आप सिमिलर कोई इंफॉर्मेशन लगता है, आपको लगता है यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा है, राइट? सो दैट बिकम्स ए एंकर इन योर माइंड. जैसे शिप एक एंकर डाल देती है कहीं पे ना रखने के लिए, वो एक एंकर है आपका, और उन एंकर्स के अराउंड आप जब नॉलेज को या तो आप कॉन्ट्रास्ट कर लो, राइट, दैट इट इज ऑपोजिट टू इट, या फिर आप इससे रिलेट कर लो. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू obtain information, to compare information, to express that, to integrate that. तो इस तरह से करोगे ना तो आप बहुत सारे उसी के ऊपर, और मेक श्योर दैट आप चीज जो है पहले दिन से शुरू कर दें. ये चीज आप पहले दिन, क्योंकि आपकी जो इनिशियल लेवल पे जो एनर्जी होती है ना, अब होगा कि आपको ये कि मैं ये चीजें सोचने के लिए लाऊं कहां से पहले दिन से ही. तो मैंने आपको बताया कि एक बार सिलेबस देखो. सिलेबस लाइंस ऑफ थॉट्स से कुछ तो थॉट क्या आएगा, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, इस थॉट तो ये चीज आपको क्लियर कर, हम करते रहेंगे, ठीक है. बट हम कल से हमारा जो शुरू कर देंगे, ठीक है, ओके. slowly and steadily you will get a booklet also. लेके जाना, नहीं तो कल क्लास ले लेना. Ending our session, take these. किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वांट. किसका? ब्रेनस्टॉर्मिंग का. यस, बताओ किस पे करना है. पढ़ा नहीं आज का न्यूज़पेपर में, क्या था, क्या था? अच्छा, वो तो बहुत पहले का चला हुआ है, ठीक है. वो तुम नहीं समझ थी. कौन सी कमेटी थी? शोम, पार्थसारथी शोम कमेटी शायद, है ना. तो वो थोड़ा सा अभी रुक जाओ. हाँ, कुछ और बताओ, कुछ सिंपल चीज जिसमें कि तुम रिलेट कर पाओ जिससे. फ्लडिंग. तो फ्लडिंग पे क्या तुम ही बताओगे मुझे? फ्लडिंग क्या बताऊं? बेसिकली वही ओरिजिन की बात करते हैं, तो हम रीजन्स की बात कर लेंगे यहाँ पे, है ना. तो रीजन्स के ऊपर अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द रीजन्स? क्या रीजन्स होंगे? हाँ, जियोलॉजी पे आओ ना, बेसिक से शुरू करते हैं, है ना. अगर आप डिफोरेस्टेशन तो काटना हो गया, इज इट समथिंग रिलेटेड टू, अगर कोई एरिया लो लाइंग एरिया है ना, तो बेसिकली टोपोग्राफी इज द फर्स्ट थिंग ना, ज्योग्राफी इज द फर्स्ट थिंग. किस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन है. अगर मान लिया कोई एरिया गड्ढे में है तो फ्लडिंग तो नेचुरल है ना, वहां पे आएगी ही आएगी, है ना. अगर मान लिया रिवर बह रही है, किसी ने घर ही यहां बना लिया, तो नेचुरल पानी हो जाएगा, राइट. आपने फार्म बना लिया तो फर्स्ट थिंग इज बेसिकली यू मस्ट थिंक, सबसे पहले नेचुरल कॉजेज पे जाओगे. जब भी आप कॉज
बात करते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, आप लोगों ने पूछ लिया। सबसे पहला कोज रहेगा, रीजन रहेगा नेचुरल, देन एंथ्रोपो। एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन, जेनिक मीन्स कोज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो नेचुरल फैक्टर्स बताओगे पहले। ठीक है, नेचुरल फैक्टर फर्स्ट आपने बताया ज्योग्राफी। अब भाई न्यूयॉर्क जो सिटी है वो तो ज्योग्राफिकली ठीक ठाक बनाई गई होगी, तो इतने सालों में वहां पर फ्लडिंग नहीं हुई। दूसरा एक नेचुरल फैक्टर हो गया, वहां पे साइक्लोन आ गया, इतना इंटेंस साइक्लोन आ गया, है ना। तो सेकंड फैक्टर क्या होगा, इंटेंस रेनफॉल, मे बी बिकॉज ऑफ साइक्लोन, हरिकेन, राइट, या फिर बादल फटने से हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। व्हाट यू वर काउंटिंग वर द एंथ्रोपोजेनिक की डिफोरेस्टेशन हो गया, है ना, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हो गया, वेटलैंड्स पे एनक्रोचमेंट हो गया, राइट। कि हाँ, आप जब बेंगलुरु या फिर चेन्नई के अंदर फ्लड्स की बात करते हो, राइट, देयर यू कैन टॉक अबाउट दैट एनक्रोचमेंट ऑन द वेटलैंड्स। वेटलैंड क्या होते हैं, आपकी लेक्स हो गया, या फिर जहां पे भी वहां डिफोरेस्टेशन की बात कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेचुरल फैक्टर में क्या हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन हो गई, दूसरा क्लाइमेट हो गई, जैसे साइक्लोन आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, एकदम से पानी आ गया तो कहां जाएगा पानी, फ्लडिंग कर देगा ना। सिंपल सी बात है। फ्लड्स कैन बी नेचुरल फ्लड्स, अब रिवर के आसपास तो फ्लडिंग होगी ही होगी, राइट, वो तो होगी ही होगी। अब एक और फैक्टर देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो हम मान रहे हैं कि सी लेवल राइज करेगा, ठीक है, तो कोस्टल एरियाज अपने आप सबमर्ज हो जाएंगे, फ्लडेड हो जाएंगे। थिंक एट दैट लेवल ऑल्सो, है ना। एक तो आप की बात कर रहे हैं छोटी से लोकेशन पे, अब हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, वो भी फ्लडिंग ही है ना। तो फ्लडिंग एट द वेरी लार्ज स्केल, जिसमें ही अगर मान लिया कि 10 मे बी 10 सेंटीमीटर भी अगर पानी बढ़ता है, बहुत ज्यादा होता है 10 सेंटीमीटर, कितने एरियाज फ्लड हो जाएंगे, है। शाहरुख खान का घर डूब जाएगा, है ना। शाहरुख खान का वो बताते हैं ना कि कहीं उस पे है, सी फेसिंग है ना। तो इस तरह की चीजें जो है आपको ये इस तरह से सोचना है ना। एक तो चीज हमने बात करी रीजन्स की, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। अब दूसरी चीज पे, दूसरे लेवल पे बात करते हैं। दूसरे लेवल पे बात होगी, रीजन हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अलग अलग लेवल पे सोचते हैं, इसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द बायोडाइवर्सिटी, है ना, टू द मैन मेड स्ट्रक्चर्स, यू कैन से आवर प्रॉपर्टी, ठीक है। ह्यूमंस को क्या हो सकता है, डेथ, डिजीज स्प्रेड हो सकती है, स्नेक क्रोकोडाइल्स घरों में घुस जाएंगे, है ना, और सारे डिजीज फैल जाएंगी, बॉडी सड़ेंगी तो और ज्यादा डिजीज फैल जाएंगी, है ना, वो होगा। बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारा इंडेंटेशन से जो है पेड़ों की डेथ होगी, एनिमल्स की डेथ होगी, तो फ्लोरा और फाउना दोनों का नुकसान होगा सबमर्जेंस की वजह से, राइट। प्रॉपर्टी पे आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, राइट, आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसेस पूरे के पूरे उड़ जाएंगे, कार्स, ठीक है। तो देयर इज अ नेट लॉस ऑफ द इकोनॉमी, इनकम, है ना। ये सब चीजें आप
देखोगे प्रॉपर्टी का लॉस, देन आप सोचोगे इनके ऊपर इस पे what to do, what had been done, right? What steps had been taken by the government of India. Steps taken by the government of India. Okay, so steps taken में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप समझोगे एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, देश का कितना पोर्शन फ्लडिंग से अफेक्टेड है. अप्रोक्सीमेटली 10-1% तो फ्लडिंग से है, 10 से 12%. ठीक है, इट्स ए नेचुरल डिजास्टर, राइट? वी हैव फ्लड कमीशन फॉर इट. We have National Disaster Management Authority headed by the Prime Minister of India, right? We have National Disaster Plan 2016 which gives directions of all kinds कि क्या करना चाहिए डिजास्टर के टाइम पे, है ना, क्या क्या स्टेप्स होंगे. We have National Disaster Response Force at the national level. We have State Disaster Response Force at the state level. We have our paramilitary agencies like ITBP, right? We have other agencies which continuously work. We have volunteers like me and you who can go and help during the flood times, right? सबसे पहले आप steps taken. Are the steps sufficient? So what more is needed? To have some innovative idea. You can tell that. Or you have read something from other country, what USA is doing. So you can quote best practices. What are the best practices? So countries, maybe USA and other countries, why don't we adopt them in India? We can save people, property, biodiversity. Right? So what I told you is to how to look at it. Yes, steps taken in disaster, we take steps at various levels, right? So I didn't go there at that level as of now, right? Because you do not understand disaster management, so I don't want to go to that. This is the basic level where you can process your information. अगर आपको इतना पता है फ्लडिंग के बारे में, कौन सा आंसर नहीं लिख सकते हो आप? आपके पास कोज है, कॉन्सिक्वेंस है, स्टेप्स टेकन है, एंड व्हाट मोर इज नीडेड है. यही तो 4 चीजें चाहिए उनको. डिस्कस द मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग एंड व्हाट शुड बी डन, व्हाट स्टेप्स आर नीडेड. ये क्वेश्चन हो गया. I believe you can write that question now. A little bit more processing, some further more is required. थोड़ा सा आप रीडिंग मारोगे, आप लिख दोगे इस चीज को. यही है. If you have this approach in your mind, you can address the questions quite easily. ठीक है? Is it painful? It's just logic. है ना? तो ऐसे आप अपनी नॉलेज को प्रोसेस करना है आपको रेगुलर बेसिस पे. Whatever I will tell you, my strategy will be like that, but unless you press your mind, right, you activate yourself, it is difficult for me to even get into your head. Allow me to get into your head, maybe more things will come out of it, right? So let's do it in the times to come. ठीक है, कोशिश करेंगे हम जितना अच्छे से कर पाएं चीज़ों को, right? और वी डोंट हैव एनीथिंग टू रन फास्ट, बट चीज़ों को समझते हुए चलना है जितना भी आपको समझ में आए. ठीक है, कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर कमिटेड गोल इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है, एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस वट एवर यू आर डूइंग. नेवर लेट योर सेल्फ डाउन इन योर ओन आईज. बी जस्टिफाइड फॉर योर सेल्फ. यू आर डूइंग इट, सो हैव फेथ दैट आई एम डूइंग इट एंड आई कैन डू इट. एलियन आके सेलेक्ट नहीं होते हैं, हम ही लोग सेलेक्ट होते हैं यहीं पे, है ना? तो आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो. ठीक है,
सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आज इतना सुनने के लिए, है ना। चलो फिर मिलेंगे हम कल मॉर्निंग 10 o'clock। टेक केयर।